good morning, students. I hope you are doing good, and I am also good. चलो, come fast, बेटा. जल्दी जल्दी आ जाओ. Yes, today's second session of accounting. जल्दी से कमेंट सेक्शन में हाय बोल दो. एंड बिफोर स्टार्टिंग एनी सेशन बेटा, फर्स्ट आई विल रिवाइज क्विकली all our basic rules of accounts. If you remember, in case of modern approach में क्या था सर? In case of modern approach, asset minus liability is equal to capital. Asset minus liability को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? It's a capital. And remember, income minus expenses is equal to profit, but if expenses exceeds income, then it's a loss. चलो, this is a modern approach of accounting. And what is the traditional approach of accounting? ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको क्या याद रखना है? इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, यस बेटा, जल्दी से याद करो. इन केस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, फर्स्ट रूल इज द डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर. ओके, दैट इज द ड्यू रूल. इन केस ऑफ उधारी, उधारी मीन्स क्रेडिट. In case of udhari, it is called as debit the debtor, credit the creditor. And second rule is debit the receiver, credit the giver. Okay, so debit the receiver, credit the giver. And remember, debtor becomes giver, creditor becomes receiver. You recalled it in the last session. Okay, real account debit what comes in, credit what goes out. And nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. What I expect from you: daily attendance. If you want to clear, see, many students are confused. Sir, we are in the 12th standard. Should we go for the foundation course for May exam, or should we go for the November exam? There is a lot of confusion for many students. Okay, so बहुत सारे students को बेटा ये confusion होएगा कि सर हम लोग फाउंडेशन में कौन सा एग्जाम दे, मई और नवंबर और दिसंबर, जून और दिसंबर. सो यू आर वेरी कंफ्यूज. सो आई विल गिव यू वन, यस, opinion, one genuine opinion. See beta, every 6 months are important for you, correct hai? So you are not attending exam, it means you are going to fail. Okay, you are not giving attempt, it means you are going to fail. So it's better कुछ करके हम लोग मरे ना. Okay, so at least you try to give this exam, you give your 100%, and if you fail, then beta it's okay. But instead of giving attempt in June, you if you're giving it in the December exam, so beta it's of no use. So frankly speaking, beta, go for June exam. Many students, they are asking me, sir, now I'm in 12th standard, board exam will be there. See, board exam you do your proper management. Board exam, and after that you will have minimum 1.5 month. And if you do regular these classes from first day, from the December exam, now from the December month, if you are, if you plan for your study कि daily 6 to 7 hours for CA course and 6 to 7 for 12th standard, बेटा you will definitely score more than 300 marks. तो आप जो भी बच्चा ये कंफ्यूजन में है, जो भी बच्चा ये कंफ्यूजन में सर मैं कौन सा एग्जाम दूं, दिसंबर एग्जाम दूं या नेक्स्ट दिसंबर 25, ओके, और अभी का तुरंत वाला एग्जाम दू, मतलब 24, सॉरी नॉट 25, सो 24, और शुड आई गो फॉर जून 24? सो बेटा, ओनली वन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, क्या कि यू गो फॉर जून एग्जाम. यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू गिव जून एग्जाम. ओके, चलो, सो से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट फटाफट. चलो, कौन कौन आया आज क्लास में? हाँ, एंड व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर स्टार्टिंग द सेशन? Comment all rules of accounts in comment section beta. Type all comments in our board of studies app, all rules of accounts. What you have to type? All rules of accounts: debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver. Real account debit what comes in, credit what goes out. And nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. एक ही minute, just I will adjust some settings. थोड़ा सा सेटिंग एडजस्ट कर लेता हूं बेटा. ओके, अभी ये पिछला, हाँ जी, अभी थोड़ा क्लियर हो गया. ओके, चलिए. सो फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए. नाउ आई एम
I saw, yes, beta. Chalo. So 198 students are there who are watching on the YouTube. But beta, I request you all to please join our all sessions on our Board of Studies app. तो Board of Studies app में आइए और वहां पे ज्वाइन कीजिए अपना सेशन. So first in last session, beta, what we have seen. Just quickly revise. Screenshots बोले थे आपको मैंने to take some screenshots and maintain your 100 pages book. Tell me in comment section, have you maintained your 100 pages book? Yes, 100 pages book maintain किया क्या? Yes, Viranjini ji, good morning. Prasad, Mahi, WROK, Ria. Chalo, tell me your city names. Tell me your city names. Fatafat, fatafat, fatafat. Tell me your city names. यश दास. चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आपकी सिटीज. ओके, यस सर, कंप्लीटेड. उत्कर्ष शर्मा फॉर मुंबई. चलो जल्दी 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 जल्दी. ओनली वन स्टूडेंट बेटा. पीयूष कुमार इज सेइंग सर आई मेंटेन 100 पेजेस बुक. वेरी गुड बेटा. हाँ जी. रांची से हमारे उदयन जी, रेड्डी जी, ओडिशा भुवनेश्वर. वेरी गुड बेटा. हितेश, हिमांशु, ट्यूबा, अखिल, मुस्कान, राखी, स्वप्निल, कल्याण से, बीकानेर, नादिर. वेरी गुड बेटा. परभनी से हेमंत जी, महाराष्ट्र. वेरी गुड बेटा. जयपुर से हिमांशु. अनवी फ्रॉम बरेली. अरे वाह. दत्ता जी हैदराबाद. ऐश्वर्या सोलापुर. वन्या जी मैसूर. वेस्ट बंगाल से बंकुरा जी, ईशानी बैनर्जी. वेरी गुड बेटा. तेलंगाना से बेटा सौम्या. वेरी गुड. चलो आज एक क्विज खेलते हैं. आज क्विज, आज नहीं, लास्ट में विल प्ले सम गेम्स बेटा. 5 minutes का क्विज वी आर गोइंग टू डू. ऑल जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट. तो आज देखेंगे. यस, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी. यस, हिंदी में कितने लोग कंफर्टेबल है. एंड टेल मी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश. Okay, only in English. And who are in both? Who are in both? So I want three options. Number one, those who are comfortable in Hindi only. Second option, those who are comfortable in English. And third one, both. Yes, beta, your comments are visible. खुशबू मुंबई से है. हिंदी इंग्लिश इज अखिल का. आदित्य बोल रहे हिंदी में. वान्या जी बोल रहे बोथ. रुशाली बोल रहे मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे क्या बेटा. आ रहे बेटा. रुशाली, आई कांट रीड 200 नेम्स ना बेटा. यस, आई कांट रीड ऑल 200 नेम्स. महक बोल रहे हिंदी बोथ. वन्या जी बोल रहे बोथ बोथ. हिंदी वाले बहुत है. मिसेस चैतन्या जी, आई एम कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश. ओनली इंग्लिश सर. हरिणी जी, ओके. माही शाह, इंग्लिश ओनली. बोथ ऑप्शंस आर मोर. इंग्लिश ऑप्शंस आर लेस. हिंदी ऑप्शंस आर ऑल्सो लेस. South Indian students, don't worry beta, my explanation will be in English. Only revision part I will take in Hindi. चलो, both options बहुत है. And South Indian students, believe me, after 1 year, you will understand Hindi also in better way. Okay. Yes. कुणाल जी, YouTube पे कोई कमेंट सेक्शन ऑन नहीं होगा. रीजन इज वेरी सिंपल. बिकॉज वी आर रनिंग दिस एक्टिविटी ऑफ BOS अंडर अवर ओन ऐप. हमारा ओन ऐप है. सो हमने YouTube को कमेंट सेक्शन को बिल्कुल भी ओपन नहीं रखा है. इफ यू वांट टू आंसर, यू हैव टू आंसर इट इन ओनली इन, यस बेटा, our board of studies app. Okay. Sachida ji, your comments are, yes, I can visual, your comments are visible. Yes, Mehtab ji, very good. चलो, so start करते हैं.
तन्नू बोल रहे हैं मेरा नाम ले लीजिए। यस बेटा तन्नू जी आपका नाम ले लिया, बहुत बढ़िया। चलिए, सो आज का सेशन, बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन वी विल क्विकली रिवाइज। हमने लास्ट सेशन में व्हाट वी हैव सीन, इन लास्ट सेशन व्हाट वी हैव सीन, चलो जल्दी जल्दी देख लीजिए। इन द लास्ट सेशन we have started with, see, accounting is an economic activity, so it is related to money. Okay, it is related to money. Second one, there is a difference between transactions and events. So what are transactions and events? Transaction means any performance of an act, whatever purchase, sales is a transaction. And what is results? Results means an event is the results or consequences of a transaction is called as a result. Okay, very simple. So transaction और event के बीच में क्या difference है ये मैंने आपको बता दिया. And most important point, accounting is a language of business. So this was your screenshot. So open your 100 pages का book, open your 100 pages का book. Okay, 100 pages का book को open कीजिए. चलो, लास्ट लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स नहीं हुए थे बेटा? यस, वी विल टेक इट आफ्टर दैट. यस, सो लास्ट लेक्चर का स्क्रीनशॉट नहीं हुआ था. Next one, next one, next one is meaning and objectives. Meaning and objectives. Definition, we have seen accounting is an art of recording. Then screenshot number 3, process is there, identification of event, record it in journal, transfer it in ledger, summarize it in trial balance and prepare financial statements. Number 4, what we have seen, what is a measurement? Measurement is a transaction and events that are to be measured in terms of money at the ruling currency is called as measurement. Procedural aspect, recording, classifying in the ledger, summarizing, we have seen, analyzing, we have seen, interpreting, and then communicating. So there are 6 parts, and then we have seen the end users. I hope you have finished with the screenshot number 6, who are end users, investor, employee, lender, suppliers, customer, government, and public. So what is the last part beta? Last part क्या था? चलो जल्दी से मुझे बताइए. What was the last part? 100 pages book and 400 pages book, we have to segregate beta. Vinod, yes. We have to keep it separately. Yes. राजी, जोक्स तो चलते रहते हैं हमारे क्लास में बेटा, डोंट वरी. क्लास में मुझे पता है 2 घंटे हम लोग एक जगह पे नहीं बैठ सकते, सो जोक्स तो चलते रहेंगे. ओके, वी लेफ्ट विथ यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द लास्ट पार्ट. सो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो. End user, 100 pages book, this one only. Okay, चलिए, recording of transactions using the financial information, screenshot number 6. आगे अभी कंटिन्यू करते हैं. Now beta, what are objectives of accounting? How many objectives? This is a favorite question for 5 marks. Okay, IMP question. Today's screenshot number 1, today's screenshot number 1, then you can complete it afterwards beta. Yes, screenshot number 1, modern and traditional approach, that is in the second break. Okay, after break beta, today we are going to finish with this unit. Okay, so first half is our theory unit 1 and second half will be action part. So we will divide our session in 2 parts. Objectives of accounting. Sir, what are the objectives? Why we are learning this accounting? What is the aim? हमारा objective क्या है? हमारा aim क्या है? क्यों सीख रहे हैं हम लोग accounting? There are बेटा 5 way objectives. Number 1, SAP to know is a shortcut. SAP to know is a shortcut. Okay, what is the shortcut beta? SAP to know. Now this is a
memory technique. इसको क्या बोलते हैं? It's a memory technique. You can recall it in the exam. At least these words. S. Now what is S? S means systematic recording of transaction. See, accounting क्या करता है? Accounting doing systematic recording. Same, that generating information. You remember that. तो systematic recording is your first objective. It's simple, sir. Yes, PPD आपके लिए मैंने नए नए PPD बनाए हैं. This lecture, बेटा, for new exam, we are in. Yes, SAP to know. SAP to know. Okay. So PPDs, I hope you are you like my PPDs and my presentation, and you are enjoying this presentation. Say yes or no. Okay. चलिए. I want one or two students who will give me daily basis pay. How many of you are ready, beta? How many of you are ready to give me daily basis all PDF if your handwriting is good? Okay. So I will share your notes to all these students. ठीक है? SAP to know. Now, what is first one? Systematic recording of transaction. Systematic recording of transaction. This is today's screenshot number 1. Wait for some time. What is A? A means ascertainment of results. Once you record it, you want your profit or loss. What is result? Result means profit or loss. What is result? Profit or loss. Okay. You are interested in profit or loss. Now, what profit I earned? What are losses that I bear? Okay. So, ये PPT है. I am ready, sir. Okay. Very good. We'll do one thing. We'll keep one group of telegram का एक group बना लेंगे. So you can share your notes in that telegram channel and I will show it to all over Indian students. ठीक है? All over India में बताऊंगा. So give me 1 to 2 days. I will create one channel for you. Okay? चलिए. Next one. Systematic recording of transaction means journal. Very good. Who wrote this? Yes, it is a journal, beta. Systematic recording is a journal. Indrashish. 100 pages के बुक में लिखना है. These things you have to write it in 100 pages book. Next one is the ascertainment of financial position. Ascertainment of financial position मतलब क्या बेटा? Balance sheet. Balance sheet is a financial position. So financial position means where you are going to record liabilities, what are your obligations and what are your assets. Once I will explain it in Hindi also. Don't worry. So balance sheet is a third part. Balance sheet is a third part. Providing information to various users. Providing information to various users. So you are providing this information. After writing this, you will provide this information to various users. Okay. And last part, to know the solvency position. टू नो दी सॉल्वेंसी पोजीशन. तो हम लोग क्या बनाएंगे? एक सॉल्वेंसी पोजीशन जो है वो भी बनवा करेंगे. तो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स. चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो. एस फॉर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. ए फॉर एसर्टेन. ओनली राइट डाउन द शॉर्टकट. सैप टू नो एंड रिकॉल इट. सैप टू नो, रिकॉल इट. सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. ए फॉर एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स. थर्ड वन, ascertainment of financial position. Fourth one, providing information to various users and to know the solvency position. Soumya ji, please try to understand. There are many students who are not from south background, south region, and these students better, those are comfortable in Hindi because they are regional medium, because they better studied from the vernacular medium or their regional language, and therefore better they found a lot of problems in English session. I know you have to give your paper in English, so that's why better my explanation part, Soumya ji, will be in Hindi, sorry, in English, and my revision will be in Hindi. Better please bear some time. ठीक है? चलो एक बार हिंदी में समझ लेते हैं. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपको क्यों कर रहे हो, आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो. फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वन कि आपने प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने चाहिए ट्रांजैक्शन. फिर उसके रिजल्ट्स जो होते हैं, उसके रिजल्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने के बाद बेटा उसका रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस. एक बार वो आने के बाद आपका फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन किससे समझता है? बैलेंस शीट से. चौथा बेटा हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है. अकाउंट्स क्या करता है? इन्फॉर्मेशन यूजर्स को पहुंचाता है. यूजर्स कौन? वो देखा था ना, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स. एंड टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन. सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब आपकी कंपनी फायदे में है या नुकसान में है. मतलब सॉल्वेंसी मतलब आपकी कंपनी अभी भी बेटा जिसका दिवाला निकला नहीं है. सॉल्वेंसी मतलब क्या? जिसका दिवाला निकला नहीं है. वैसे आपकी कंपनी नहीं है ना कि जिसके लाइबिलिटीज देना बहुत है, जिससे आना कम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइबिलिटीज. ओके. सॉल्वेंसी पोजीशंस मतलब लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स. ओके. टेक अ स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट नंबर 1 ऑफ द डे. फर्स्ट सेकंड सेशन, फर्स्ट स्क्रीनशॉट. सॉल्वेंसी का मीनिंग होता है नादिर दिवाला निकलना.
चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरी वन ऑफ यू, वेरी गुड बेटा। चलो, विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अभी हम लोग निकलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के लिए। ऑब्जेक्टिव्स तो सर बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग कैसे आया? This is a new part which is added in your syllabus. Okay, evolution is a new part which is added in your syllabus. See, evolution, accounting finds its root as early as 2023 का, as early as 2023 नहीं था, it is 4000 BC. Okay, कब आया बेटा? देखो, it's not in 2023, you are in 2023, ये आया था before Christ बेटा. Okay, 4000 BC. Now here 4000 BC में Egyptians use some form of accounting for their treasuries. Okay, some part of their treasuries के लिए बेटा Egyptians use some form of accounting. Next, अभी 4000 BC में what happened? The in charge had to send day-wise reports to their wazir. Okay, wazir मतलब उनका leader. वजीर एकदम लीडर नहीं, उनका लीडर, एंड वजीर लीडर इज किंग. ही हैज टू प्रेजेंट दैट रिपोर्ट टू किंग. ओके, एंड वजीर्स यूज्ड टू सेंड मंथली रिपोर्ट्स टू किंग. ओ सर, मींस we are a chartered accountant, we are wazir, we are wazir. Okay, and you know, accountants means who are doing daily entries. They will send report to chartered accountant, and chartered accountant will give this information to client. So client is our king. Client is our king. We are wazirs, and beta, our accountants, yes, there are some treasury function. They do treasury function. Got the concept? अरे समझ में आया क्या? Yes. Easy? Easy? Yes. Now, in 2000 BC, beta, what happened? In China, they started sophisticated form of government accounting. You are aware. In China, government, yes, whether they are diplomatic, beta. Okay, diplomatic है क्या China? No. So we are Munimji. Yes, beta. You are Wazir Ala. Okay, I am a Wazir Ala. Very good, beta. हाँ. So government accounting in China they have started with. In 700 BC, Romans using memorandum or day books wherein receipts and payments are recorded. Yes. 700 BC, where Romans, beta, they use some day book concept, day book, receipt and payment, they recorded it. Okay. In 300 BC, beta, कौन थे हमारे main? Chanakya ji wrote the Arthashastra, which contained few detailed aspects of maintaining books of accounts. Books of accounts. Communist. Very good, beta. Rushali. So government accounting is important for them. And now, Badshahon ke Badshah, king of all kings, Luca Pacioli, our king. Okay. Evolution of accounting. Luca di Pacioli, who is Egyptian, father of accounting, who wrote all rules, traditional rules of accounts, very beautifully. Debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, real debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. And I am only a follower of Luca di Pacioli. Okay, so Luca di Pacioli, his book, yes, Summa de Arithmetica Geometria Proportion of Proportionality, is considered as a first book which is based on the double entry bookkeeping system. Double entry bookkeeping system. Luca di Pacioli, he used the word
credit and debit. Credit means right side and debit means left side. In his books, and he is a person who said all entries have to be recorded in double entry system way. If you make one creditor, you must make one debtor. So his theory based on this double entry system, and he developed this technique, beta. Who is the evolution? Luca di Pasoli, who is the father of accounting. Okay. So this is how we develop accounting in India. So we are followers of Luca di Pasoli, and we also develop in the same way. And now, beta, our Institute of Chartered Accountants of India, they are doing it at very next level. See, accounting is not, limited to that basic entries. Now, accounting is far away from these basic entries, beta. There are lot of development in accounts, and which we see through accounting standards. So in Inter and CA final, you are going to see only accounting standard, but how to record it? How to record it, that we are going to see it in the foundation level. Foundation is important because here you will pass only basic entries, and at inter level you will understand how we'll record normally all complication, all complex entries at inter level, and at final level we are going to maintain it at corporate level. For example, Ind AS we are going to see it in the CF final level. So beta, how we have developed our basics. So foundation course is very important. If you want to clear better your basic concepts, foundation is a base where you will develop your accounting. So foundation में जिसका entry strong हो गया, संकेत सर है आपके साथ. डोंट वरी, इंस्टीट्यूट है आपके साथ, एंड सीए इंस्टीट्यूट आपको बहुत अच्छे से फाउंडेशन का ज्ञान देगी. दिस इज ओनली द वेयर यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन. स्टडी मटेरियल इज आवर बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर अकाउंटिंग कोर्स, एंड दिस स्टडी मटेरियल विल गिव यू guidance and confidence about accounts, beta. Don't use any other faculty's notes, even 11, 12 standard notes. It's request to all of you. See, try to solve only if you want to clear. See, beta, this is a course where you don't have to learn 2 plus 2. We are there to give you 29 into 7. We will give you multiplication, which is first time you will find it difficult. But our study material, once you grasp this study material language, you will love study material. Okay. So basically, first time, whenever you open these books of accounts, your study material, or even study material for law, study material for maths, you will find it difficult. Many private teachers will tell you ki no, there is a lot of mistake in study material. Believe me, there is now, it is, I won't say this is 100% error free. There is 99.99 because every person has chance of, for rectify him. Okay, so here what is the important point? You refer only and only our study material. और ये इंस्टीट्यूट के क्लासेस इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं जब से सिखा रहा हूं 2009 से, from that point I tell to every my student कि you refer only study material. If you are an average student or you are beta ranker, but you have to read study material thoroughly. Okay, चलो. So समझ में आया होगा आपको? यस. विच कैलकुलेटर टू बाय? बेटा सिंपल कैलसी, सिटीजन का कैलसी बाय करो, सिंपल वाला. सर मैं एक मीडियम फैमिली से हूं, जिसके वजह से मुझे जॉब करना पड़ता है, इसलिए मैं लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता हूं. क्या मैं रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ? बेटा 100% रिकॉर्डिंग देख सकते हो, पर ट्राई करो जब भी आपको छुट्टी होगा. सी देयर, दिस कोर्स बेटा गिव्स यू लाइवहुड फॉर योर फ्यूचर इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. सीए ऐसा कोर्स है जो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये आपको भी पता है कितना अफोर्डेबल फीस में होने वाला कोर्स है. और ये कोर्स को बेटा इंस्टीट्यूट ये चाहती है कि आपको सिर्फ अच्छा बुक्स ना मिले, हम लोग आपको अच्छा प्रोवाइड करें कोचिंग भी. वी विल गिव यू बेस्ट कोचिंग, ओके, एट वेरी अफोर्डेबल फीस. इवन आई एम नॉट टेलिंग यू कि सपोज इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विथ मी, इफ यू वांट टू सी योर डेवलपमेंट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, और आपको हिंदी में थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, और आप लोगों को लगता है कि नहीं संकेत सर के साथ हमें बोलने भी को भी आना चाहिए, कि ये सिर्फ कमेंट नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तो आप लोगों को बेटा मैं
जहाँ पे ब्रांच के क्लासेस लेते हो वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, वहां पे कांटेक्ट करके आपको वहां पे पूरा मेरे साथ मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। यू कैन सी ऑन माय यूट्यूब चैनल, आपको बहुत सारे बच्चे वहां पे मिलेंगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। सो इट्स नॉट ओनली कि मैं यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। यस, डेफिनेटली 100% आई विल डेवलप योर कॉन्फिडेंस, पर आपको लगता है नहीं बोलने को भी आना चाहिए, तो वो भी एक माध्यम है। और आप मिडिल क्लास फैमिली से होंगे बेटा, हमारे फीस जो है ना वो नथिंग, इट्स अ 10,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है ओनली। Okay, 9,000, 11,000. I don't know exact amount now, but these are very affordable, beta. These classes are not, beta, free of cost है। Why? Because institute wants to spread this knowledge, और आप लोग इसका फायदा उठाओ। आई थिंक कि आपको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आई पेड 60,000 रुपीज फीस। Why there is a need? Institute is providing you best of best knowledge, and ultimately if anyone is giving you a guarantee, मैं पहले ही बोल देता हूँ, no one will give you guarantee. No beta, no, not a single person. You are only the person who gives guarantee that you will become a chartered accountant. And see this course, you will find one day it's very difficult. It's not I don't want to do study. यस, ये फील सबके साथ होता है। और ये जो है ना, यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा तेज होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने आपके शॉर्टकमिंग्स के ऊपर एक भरोसा आना चाहिए कि सर नहीं, मुझे जीतना है, मुझे ये कोर्स करना ही है, और मैं चैलेंज लेके कर रहा हूं। एंड बेटा सी, दिस कोर्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सिर्फ आपका जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत मायने रखेगा। लाइफ में सुन के रखना, ये कोर्स आपको बहुत बार लगेगा, दिमाग में आएगा कि सर मैं लीव कर दूंगा, सर मेरे से नहीं पढ़ना हो रहा है। बट बेटा यहाँ पे आप लोगों को दिमाग से तेज, और ये दिमाग में चीज लाओ ही मत, एंजॉय कीजिए योर स्टडी। इफ यू एंजॉय योर स्टडी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम सीए इन फर्स्ट एग्जाम। एंड ये कोर्स है ना, ये सच में ऐसा चैलेंजिंग कोर्स आपको मिलेगा, लाइफ में मेंटली फिट कर देगा। मेंटल, आज कितने भी मेरे पे उतार चढ़ाव आने दो, होता है, सबके लाइफ में होता है, पर मैं मेंटली फिट हूं कि ये चीजों से मैं बाहर आ सकता हूं, बिकॉज आई हैव डिग्री विथ मी। और ये सीए, ये दो वर्ड्स जो है ना, ये मेरी पूरी दुनिया बदल दी है इसने, ये दो वर्ड्स की वजह से। सो रिमेंबर, ये आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, कौन से भी परिस्थिति में। भले आपको एक दो अटे में एक्स्ट्रा लगने दो, पर लगने ही मत दो। आप स्टडी कीजिए, कंटिन्यूस स्टडी कीजिए, आई विल बी विथ यू। ओके, चलिए, वेरी गुड। संकेत शाह ही है बेटा। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। वन्या जी, संकेत शाह इज नेम। चलिए, इन दी ओल्डेस्ट फॉर्म, वेल्दी मैन, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेल्दी मैन एम्प्लॉयड स्टीवर्ड्स। स्टीवर्ड्स मतलब कौन बेटा? यस, उनके साथ का अकाउंटेंट, ऐसा ही पकड़ के चलो। सी कौन है ये आपका? यस सर, बैटमैन, वेल्दी मैन। ओके, और उसका स्टीवर्ड कौन है? अल्फ्रेड। रिमेंबर, पूरा हैंडल करता है। हाँ, सो वी आर स्टीवर्ड्स बेटा, ध्यान में रखो। यस, ये तो सब तो जानते ही रहेंगे इनके। हाँ जी। नहीं बेटा सागर, ऑफलाइन क्लासेस को जाने की जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू ओपन चैलेंज। ओके, सी, इन कोरोना I taught many students not from Pune. I taught many students who are not from Pune, and they cleared in their first exam. Why? Because they saved their timing not by joining any offline classes. Institute is giving the best quality. Like me, they have selected a good team of faculties. No doubt in that. और ये फैकल्टीज है ना, ये पूरा 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 इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी उठा रहे। और हमारी जो बैकएंड की टीम है, बोर्ड ऑफ स्टडीज की टीम, हमारी प्रिया मैम रहने दो, हमारी मतलब जो अकाउंटिंग के रिलेटेड मैं देखता हूँ। सो ऑल दिस टीम बेटा आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। दे वांट टू गिव बेस्ट ऑफ बेस्ट टू देयर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज ओनली द रीजन कि डोंट ज्वाइन एनी, यू नो, ऑफलाइन क्लासेस। ट्राई टू अटेंड इट इन, बिकॉज दुनिया बदल रही है। एंड इफ यू आर गोइंग इन द ऑफलाइन क्लासेस बेटा, यू आर not saving your time. It's request. If you don't have control upon you, then better join. I won't say anything. But you want best of best knowledge, then better don't
to join any, you don't waste time in joining any offline classes. It's better you go with the online classes. This is the, because I was in the one person who was in the favor of always offline classes in before 2018, but corona changed my life also, beta. In 2018 I taught more than 5,000 students. But after that, beta, I understood, no, instead of offline classes, online classes are always better medium to reach to every student who are from the small village. और ये जियो ने तो बेटा दुनिया बदल दी आपकी 5G वालों ने तो. ओके, अभी आपको भी पता है. सो प्लीज डोंट ज्वाइन, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है. सो ऑफलाइन क्लासेस में बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम. हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ. वॉच दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन टू गेट द कॉन्फिडेंस. ओके, चलो. All BOS faculties are already CA. Yes, better, but obvious na, then only they will join this. Yes. ठीक है. The stewardship periodically turned towards the function of accounting, which rooted the stewardship accounting. Okay. So financial accounting emerged with the concept of joint stock company and diverse of the ownership from the management. So management is different and accounting is different. See, we are depending on accounting. So company and management are two different things. And financial accounting, ये दोनों को अलग रख सकता है. Company wants whatever information that you are the shareholder of Reliance company or suppose Tata Technology. You are a shareholder of Tata Technology. Now बेटा एकदम बढ़िया शेयर चल रहा है. And you are a shareholder of the Tata Technology. You are a shareholder of the Tata Technology. And if you want details of the company, whether company is in profit or loss, how you are going to receive it, only through this financial accounting. We as a chartered accountant, we are going to sign on that report. ओके, और हम लोग वो रिपोर्ट पे साइन करेंगे. तो आप लोग जो इन्वेस्टर्स हो, सपोज इफ यू आर इन्वेस्टर, यू विल बिलीव ऑन आवर रिपोर्ट, नॉट ऑन द कंपनी. यू बिलीव ऑन द रिपोर्ट विच इज जनरेटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसलिए तो बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेन में बहुत बड़ा दम है. चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेन में बहुत बड़ा दम क्यों है? बिकॉज आवर साइन is the belief of all shareholders. Okay, so this is very important and evolution of accounting. Yes, ठीक है. So joint stock company क्या होता है बेटा? Wait for some time. Your company law teacher will tell you what is company. Yes, how it is formed. What is it? Is the only, and I'm going to take also beta company accounts, okay, in which we are going to see details about this company. तो हमें उधर तो सीखना ही है. हमें उधर तो सीखना ही है जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है. ओके सर, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आपको समझ में आया? प्लीज प्लीज प्लीज. Thus, accounting made an important part of the decision making. Sir, accounting में ना, you can take a decision whether this company is good or not. You will understand. See, no chartered accountant will, hide some things from you. हमारी इंस्टीट्यूट यही सिखाती है हमें कि we won't hide anything from. Yes, there are some chartered accountants. There are exceptions for beta every religion also. Okay, so some religions, they are not bad, but some people make this religion bad. Similarly, some chartered accountants गिने चुने, वो खराब करते एक प्रोफेशन का नाम. ओके, सो प्लीज यू डोंट सी दैट कि यहाँ पे ऐसा हुआ इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल. देयर आर हार्डली सम चार्टर्ड अकाउंटेंट. वी नेवर, यस डेफिनेटली विल गिव द गाइडेंस फॉर सेविंग टैक्स, पर ऐसा नहीं होगा कि हम लोग ही सब कुछ खराब कर रहे हैं. तो वो करना नहीं चाहिए. ये आपको ये कोर्स भी बताता है. सो देयर आर सम एथिक्स. ओके, सो फ्रेंड्स, so you understood what is the any, thus accounting made is important part of decision making process gradually. Okay, remember. So now what is the process of accounting? So nothing to write in this. You don't write anything. So this is only evolution that we want to tell you. इंस्टीट्यूट ने ये इवोल्यूशन के लिए सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको बोला है. सो ओनली स्क्रीनशॉट नंबर 1 यू हैव टेकन टिल नाउ. Now we will move to next part. I hope you are enjoying these examples. अरे मजा आ रहा है क्या? Process of accounting. Yes. Now we are going to see what is the process of accounting. Process of accounting. Next.
Yes. Okay. Thank you, Priyanka ji. Hello, sir. I'm from the Ranchi, Jharkhand. I'm doing BCom Ons with CA Foundation. Sir, your way of teaching is very much understandable. Thank you, beta. Other thing, I'm an art student who should give me any attempt. Please, sir, tell me. No, beta. Please, sir, you can give this attempt in June only. ठीक है? चलो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है. Yes, sir. Enjoying. Full मजे चल रहे. Okay, पटेल भाई. मजा मच हो? हाँ जी. Functions and limitations of accounting. Sir, accounting की limitations? No. Before that, process. So process we already studied. No. Record करना. Identification of transaction. Input. From where you will get input? चलो, मैंने last lecture में I told you the word. Where you will get the information. Yes, what is the word that I used in the last session? चलो याद करो. Who will answer it? सर, गुरु मंत्रा सीरीज जल्दी से चालू हो जाएगी. For foundation. Okay. क्या वर्ड यूज किया था? Yes, लावी जी, तुम्हारी कमेंट आई कैन सी. हाँ, वेरी गुड. और तन्नू जी बोल रहे हैं सर तमें खूब भालो पढ़ाओ. यस बेटा, धन्यवाद. भालो मतलब अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा है उनका बंगाली. हाँ जी. सो yes, Vedant, your decision is valid decision. Yes, supporting. First, who answered it supporting word? वन्या बापू. वन्या बापू ने सबसे पहले नाम दिया ये. रविराजन जी, वेरी गुड बेटा. चलो. So supporting is the word that I used in the last one. lavi नहीं है, lavi. सपोर्टिंग इज इनपुट. सपोर्टिंग मतलब इनपुट होता है. सपोर्टिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा? इट्स एन इनपुट. इसको बोलते हैं इनपुट. ओके, सपोर्टिंग मतलब इनपुट. एंड you will get the information, economic events measured in the financial terms. Okay, supporting is the from where you can record and your accounting cycle starts. Your accounting cycle starts, you will record this transaction. Same, sir. Then you will record के बाद posting to ledger, that we are going to see it in next session only, how to post in the ledger. Then we'll prepare a trial balance, sir. Trial balance बना लेते हैं और उसके बाद हमारा final account हम लोग बनाते हैं. So this is how we prepared our accounting cycle. और ये हमारी accounting cycle होती है. And accounting cycle gives you output. Finally, we prepare it, communicate it to various users. So this is the process of accounting. Take a screenshot of number 2. This is a process how we are going to see. Okay, sir. एकदम easy process છે. Feedbacks देते रहना बेटा. Feedbacks are always better to analyze the best faculties, not only for my subject, for other subjects also. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, फीडबैक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टीट्यूट चाहती है अच्छा नॉलेज देना, अच्छी फैकल्टीज प्रोवाइड करना. And communicate it to the users. Communicate to the users. अरे समझी गए हो? ओके, स्क्रीनशॉट तो ले लिया सर. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. हाँ, यूजर्स कौन है? इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मैनेजर्स, other officers. And external users are investor, lenders, suppliers, government agencies, customers. So these are some users. So ये screenshot लो. This is the best screenshot. हाँ, so please take screenshot too. Sir, evolution लिखना नहीं है. Yes, you can give feedback multiple time. बेटा Rashika paper dash dash, I want to say the name. Faculty is not providing notes. Please give it in the feedback, beta.
यस, थैंक यू युवराज जी। डायरेक्ट एंट्री के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं, तो वो सबको धन्यवाद। यस, राजभाव। रेक्टिफिकेशन इज अ सेपरेट पार्ट बेटा, रेक्टिफिकेशन इज अ सेपरेट पार्ट। चलिए, स्क्रीनशॉट 2 ओवर। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग? सर फंक्शंस और लिमिटेशंस क्या है? सर फंक्शंस मींस कैसे अकाउंटिंग काम करता है। मेजरमेंट, इट मेजर्स द पास्ट परफॉर्मेंस, how it is working. Accounting, it measures the past performance and you can depict the current position. Okay, whatever the current position, you will show it. So measurement. Forecasting, MF. nahi, second is a government regulation and taxation. Government regulation and taxation. Okay, so you provide information to government एंड दे कैन लेवी टैक्स, तो वो लोग तुरंत टैक्स लेके आएंगे। ब्यूटी पार्लर में जाना है, चल भर दे 18% टैक्स। ओके, सो 18%। यू वांट शौक वाली चीजें 18%। नॉर्मल होटल में गए बेटा, खाना खाना है बेटा, जरूरी है 5% जीएसटी। सो सी रेट्स आर इंपॉर्टेंट, रेट्स हाउ दे लेवी यू। ओके, डिसीजन मेकिंग, सर डिसीजन मेकिंग होता है ना फंक्शंस में, क्या होता है डिसीजन मेकिंग भी होता है। डिसीजन मेकिंग, वी कैन टेक डिसीजंस because of accounts. It provides the relevant information to users for decision making. हाँ जी। Then forecasting, sir, we can predict future. Yes, accounting predicts future. Okay, so accounting predicts future. Forecasting, future. Control, sir, we can control some expenditure. ओके, घर में आपने रिकॉर्ड किया, देखो बेटा दो टाइप के। यस, आई विल गिव द एग्जांपल। सपोज इफ आई एम नॉट राइटिंग माय एक्सपेंडिचर, it might happen that my wife, she does not have control over expenditure, and if I show her records, see how much money you invested in the last month. Not invested, wasted. It's a waste of money. You bought some clothes, you bought some t-shirts, or क्या बोलते हैं आप, tops, jeans, and your beauty products. बेटा, this is the reason why my credit card bill is increased, and though that is, you have to keep some control, and this control is possible if only I note down all her expenditure. If I note down all her expenditure, मैंने उसके रिकॉर्ड किए सभी खर्चों को, तो ही मैं उसको बोल सकता हूँ ना, कंट्रोल में रख सकता हूँ, देख तेरे खर्चे कितने, कितना मुझे तेरे वजह से इतना कमाना पड़ता है। ओके, ओके, आया समझो? अरे समझी गयो के? Haji, control over your weaknesses and provides feedbacks to check weaknesses. So accounts gives feedbacks to check weakness also. And you can compare and evaluate. देख वो बाजू वाली, अरे देख बाजू वाली मतलब, सी उसका खर्चा कितना कम है, उसका पति कितना खुश है, और कितने कम पैसों में वो घर चलाती है, और यू कैन कंपेयर इट। हाँ, नाउ वी कैन रिकॉल द एग्जांपल सर, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। ओके, so performance is an assessed relation to the target disclosed information regarding accounting policies and contingent liabilities for predicting and comparing. Okay, sir, these examples I'm giving only for understanding purpose. These examples and my real life are not connected. इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। मेरी वाइफ एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ भी बोल सकते हो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और बहुत काम भी करती है, और आई एम प्राउड ऑफ हर। वो मेरे बच्चे का भी ख्याल रखती है, नॉट अ सिंगल डे उसने मुझे कंप्लेंट किया है। वो मेरे से ज्यादा काम करती है, मैं इतना ही बोलूंगा। ओके, सो यस, ये भी रिकॉर्ड कर लो, उसके बुरी बातें मत रिकॉर्ड करो। हाँ, ओके, सो मोना मैम को ऐसा बोलने का नहीं, मोए मोए। ओके, वाइफ इज मोए मोए। ओके बेटा, चलो स्क्रीनशॉट्स लेना ही है, स्क्रीनशॉट तो लेना ही है। दिस इज स्क्रीनशॉट नंबर 3। स्क्रीनशॉट नंबर 3, यू हैव टू राइट इन 100 पेजेस बुक। एम्प्लॉय इंटरनल में भी ले सकते हो बेटा, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं।
चलो, अच्छा कर्म किया तो मिलेगा बेटा आदित्य, अच्छी वाइब सबको मिले। यस, कर्म अच्छा करो। यस, नेक्स्ट। मिस जैनाब, डायरेक्ट एंट्री से बेटर फाउंडेशन. You can go if you have time 1 year, so it's better to give. If you have completed your BCom, then I can tell you to go for the direct entry. But foundation, if you have sufficient time to go with the foundation, because you're in second year BBA, so you can still give 1 2 exams of foundation, and you can clear it within first exam. Okay, my suggestion. Yes. नादिर बोल रहे हैं कि सर योर क्लासेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, टाइम का तो पता ही नहीं लगता बेटा, थैंक यू। एंड यू आर ऑल्सो गुड लिसनर्स, आप लोग कमेंट करते रहते हो, सो आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि आई हैव गिवन 1 hour, आई फिनिश विथ 1 hour, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मुझे भी नहीं ध्यान में आता है। ओके, वेयर टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन 100 pages बुक? यस बेटा, 100 pages बुक। चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, एक्चुअली अकाउंटिंग के कोई लिमिटेशन नहीं है, but yes, definitely we cannot measure in terms of money my loyalty of my employee. Loyalty, उसका सच्चापन। अभी मेरा जो एम्प्लॉय है बेटा, मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज है, yes, I have one restaurant where 40 employees are there. Even I have one salon where beta there are more than 10 employees. So these are my other business which worked under my mother's name. Okay, so मेरी माँ ये सबकी मालकिन है। तो one important point, but beta, I manage all these things, and she's a person. So you can see what chartered accountant can do. So I'm doing multiple, passive income, जो बोलते हैं कि other incomes also. So I do some other activities also. Even these investments are very important, me and my wife. So this is possible only because of our vision, and vision जो है ना वही अच्छा रहता है हमेशा. So loyalty जो है, the balance sheet cannot reflect the value of factor like loyalty. So loyalty means मेरे पास जितने भी employees है अच्छे खासे, so only payment I record as expenses, but their loyalty I can't record. Okay, and that loyalty is important for me. So they are not only giving 20,000 expenditure is only sufficient. What they are giving me in return is more important. और मैं मेरे employees की loyalty को हमेशा काउंट करता हूं, मैं उनको समझ के लेता हूं हमेशा, एंड दैट आई कांट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन. Balance sheet shows the position as on day, but it can't give you future. It can't give you future. Okay, so future, one human being, you cannot identify your future due to balance sheet. Only present you can see. It ignores मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब इसमें इग्नोर होता है. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड्स ऑन पर्सनल जजमेंट्स. ओके, सो पर्सन टू पर्सन your provisions are different. Your actual expenses you can show, but there are some, we record provisions, and this provision I will teach you. Person to person it varies. Person to person it varies, remember. So accounting estimates depends on personal judgments. Accounting principles may conflict with each other, that I will teach you afterwards. FIFO method is there, weighted average method is there, LIFO method is there. So gives you different answers, sir. Depreciation, different answers. Okay, okay. And only consider those items which are in the nature of monetary asset. Which are in the nature of monetary asset. Okay.
So these are some limitations and different accounting policy leads to manipulation. मतलब बहुत सारे रास्ते होंगे तो कहां पहुंचना है यही नहीं समझ में आएगा, तो फिर फ्रॉड होने के चांसेस है. मैनिपुलेशन मींस फ्रॉड्स. स्क्रीनशॉट नंबर कौन सा है? 4. टुडे स्क्रीनशॉट नंबर 4. ओके, आज का स्क्रीनशॉट नंबर 4. अरे वाह रे वाह मेरे शेयर लोग, नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन दिस. हाँ, क्या बात है. Sir, how accounting policies conflict better? Wait for some time. I will teach you why these policies, because today we won't work different policies, but it is not in one day you will understand all these terms. So say, just recall this word that accounting policies differ with each other, and I will teach you in the inventory valuation. Okay. और कुछ और कुछ और कुछ. Yes. What working in CA job? बेटा CA job में you will understand ना बेटा, अभी this is not the right time. First clear your exams of foundation, you will understand in the practical life. So we have that practical knowledge के लिए separate working, separate training, and this separate training is very important. So today I can't give you these what workings. Role of chartered accountant, but definitely I'm going to teach you what we are going to do it in the future, but not now. चलो, bookkeeping. What is bookkeeping? बेटा bookkeeping मतलब क्या? Before break बेटा we are going to see these words. So break के बाद हम लोग वापस से देखेंगे ये. So अरे मुझे तो समझे नहीं, we completed 1 hour इतना फास्ट. भाई साहब समझ में नहीं आता 1 घंटा कहां पे गया. सच में आप लोग ना बेटा एक नंबर हो सब. यस, 1 hour कहां पे गया मुझे समझा ही नहीं. एंड कंसिस्टेंटली यू आर सिटिंग. हैट्स ऑफ टू योर एनर्जी. 1 घंटा पूरा मुझे मस्त एकदम समझ में नहीं आया. यू आर ट्रू सीए स्टूडेंट्स. So bookkeeping is an activity concerned with recording. See, bookkeeping means only recording, record karna of the financial data relating to business operations in a significant and orderly manner. So record karna matlab bookkeeping. Bookkeeping matlab only recording, only recording. Red pen है ये. ये red pen से लिखना. Screenshot number 5. Bookkeeping is a recording of the transaction, recording of the financial data relating to business operation in a significant and orderly manner. Orderly means date wise. Orderly means date wise. Okay. हाँ बेटा, हाँ बेटा. इन्फ्लेशन मतलब बेटा, इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है जो चीज 100 रुपए की होती है हम लोग 100 रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे. अभी पेट्रोल पेट्रोल 106 रुपए पे गया, बट बाद में 120 पे जाएगा, बट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इट एट टुडेज वैल्यू. It does not consider future value, but economics and financial management considers future values. Okay, so bookkeeping means only keeping records. Objectives of bookkeeping: complete recording of a transaction and ascertainment of effects of the on the financial effects on the business. So this is screenshot number. अरे यार bookkeeping का क्या screenshot था, नंबर भूल जाता हूँ रे मैं, बुढ़ापा आया है. Screenshot number 6. Okay, so bookkeeping, take a screenshot. 6. Screenshot number 6. Very good बेटा पायल. ए ऋतुराज, अरे मैं सबके क्वेश्चन को कैसे रिस्पॉन्स दूंगा रे. First batch for new course and I am enjoying with you. ठीक है.
सब पर्सनल जजमेंट मतलब क्या, मैं बाद में बताऊंगा बेटा। तू 10% प्रोविजन करेगी, मैं 15% का प्रोविजन करूंगा। पर्सन टू पर्सन प्रोविजन अलग होते हैं ना। व्हाट इज प्रोविजन, दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन द नेक्स्ट सेशन बेटा। चलिए, so ascertainment of financial impact on the business, complete recording of transactions. ascertainment मतलब पहचानना, ascertainment मतलब पहचानना बेटा, आइडेंटिफाई करना। ascertainment मतलब पहचानना। ओके, so some students are asking me what is ascertainment, मतलब पहचानना। if you don't understand any English word बेटा, you can ask me. if I see your query, I will definitely answer you. okay, चलो, so ऑब्जेक्टिव्स दो है। कौन से दो ऑब्जेक्टिव है? फर्स्ट वन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड सेकंड वन इज ascertainment ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। टुडे बेटा आई एम फीलिंग sad because today, wherever this setup, because now I have some work in Kolkata, so I came to Kolkata. And here, beta, the problem is that we do not have a system which is where I can, I have studio at home. Okay, so here there is no studio, and that's why I am facing the problem that I will sit on the one place and explaining you. But the energy level is the same. But spare some time better with me, because now next 20 days I'm here. So I will sit on one place and I will teach you better. So in Pune it's possible कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसा बैठ के लेक्चर देना. I always feel कि comfortable when I will I normally take lecture बेटा not by sitting on one place. Okay, stand up position में मुझे अच्छा लगता है वो लेक्चर लेना. So आज थोड़ा सा समझ लीजिए नेक्स्ट 10-15 days, बट एनर्जी लेवल डेफिनेटली विल बी द सेम. ओके, एनर्जी लेवल सेम ही रहेगी. तो थोड़ा सा बैठ के मुझे बुरा ही, मैं अभी टेक्निकल पर्सन से भी वही बात कर रहा था यार, इधर नहीं अच्छा लगता बैठ के. ओके, चलो ठीक है. सो यू अंडरस्टूड स्क्रीनशॉट नंबर 6 यू हैव टेकन ascertainment. हाँ जी, बुक कीपिंग इज अ स्मॉल पार्ट रे बेटा, अकाउंटिंग इज अ ओशन. ओके, ठीक है, अकाउंटिंग इज सी, तो बुक कीपिंग इज अ रिवर. ओके, बुक कीपिंग छोटा है. सो मीनिंग इज जस्ट रिकॉर्डिंग हियर, समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा, समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा. ओके, so means summarizing means beta all P&L balance sheet up to that level, financial statement P&L balance sheet banao up to that paper level beta summarizing. Recording is only in journal. Next one, constitutes base of accounting. So शुरुआत होती है where beta, yes, शुरुआत is a starting point of bookkeeping is a starting point, and here it's a language of business. We can communicate through financial reports with each other. Okay, your and my language of accounting is a language of business. Okay, and language of business is accounting. Okay, and base is bookkeeping. Financial statement, no, balance sheet, P&L, bookkeeping, no, it's not a part of bookkeeping. But accounting, definitely it's a part of accounting, sir. Screenshot number, I think 7 है ना रे? हाँ जी, 7 है. इधर याद करना पड़ता है रे. नो बेटा, जॉय बैनिक, आई एम नॉट बंगाली, आई एम गुजराती. हियर केम फॉर सम पर्सनल वर्क. पल्लवी राज इज सेइंग इन कोलकाता. वेरी गुड. यस, कोलकाता में मैं लेक टाउन के यहाँ पे रह रहा हूँ बेटा अभी फिलहाल. सो सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी वेयर आर यू स्टेइंग इन कोलकाता, नियर लेक टाउन. चलो, नेक्स्ट इज मैनेजरल डिसीजंस. मैनेजर डिसीजंस cannot be taken, can be taken. Subfields. Now subfields beta we'll see it in the next session. No subfields. And here there are several subfields. So subfields matlab accounting ke parts of accounting. There are subfields. Financial position cannot be ascertained, can be ascertained. Can be ascertained, cannot be ascertained. Subfields. So financial position, screenshot number, I think 8.
8 नो, क्यों भूल रहा हूं मैं? 8, screenshot 8. You can take a screenshot. ठीक है, screenshot 8. Now what are subfields of accounting? चाय रख दे रे, चाय रख दे, चाय. Subfields of accounting. Now what are subfields of accounting? Let's try to understand. Yes, we will finish it in this session only. Subfields. Financial accounting means balance sheet, P&L, ये journey. Yes, wait for some only 5 to 10 minutes, beta. I'm going to finish with the session. So don't worry. Financial accounting. थोड़ा सा part. I know theory is very boring part, but first up will be theory and second up will be practical problems. Financial accounting is a preparation and interpretation of financial statements. Preparation and interpretation of financial statements. Historical in nature. Final step in the P&L and balance sheet. Okay, screenshot number now. Take a screenshot number now. Subfield. Pula likhna. 9 number screenshot. Management accounting. Grouping information and preparation of reports as desired by the manager for discharging their functions. It is concerned with the internal reporting. Stewardship, planning, control, and decision making. See, management accounting matlab decision making. So you can take decisions by writing accounts. Okay, so writing management decisions. So decision making can be done by, it's a subfield of accounting. It's a subfield of accounting. Screenshot number 10. Screenshot 10. Screenshot 11. Cost accounting. It's a process of recording cost, income and expenditure, and prepare a cost sheet is the last part, periodical statement and reports. So recording cost of income and expenditure. Okay. So screenshot number 11. So cost accounting is the next concept. Cost accounting 11. Please note down all these points in your 100 pages book. ठीक है. And after break, beta, please open your 400 pages book. Today I'm going to teach you what to write it in the 400 pages book. Social responsibility accounting. What you are getting from this society and what you are incurring benefits getting from society and what you are providing to them. For example, Tata Birla. So see, Birla Hospital is there, Birla Mandir are there, beta. ISKCON का मंदिर भी वो लोगों ने किया हुआ है. So you know के that is for society and they are using your air, water. So these are the cost for them and the benefits they are providing to society. So social responsibility accounting is also a part of. कौन सा screenshot था रे? 12. Yes, take 12 number. And last part is HR accounting, human resource accounting. It's not beta very famous in India, but you record human in your books and how it is recorded, that is the human resource accounting. It's not popular in India. Only one company beta they recorded, जो Infosys थी, अभी उन्होंने भी बंद कर दिया. 13 number. So take a screenshot and write it. So we'll take a break up to क्या हुआ है 12:10. So 12:10 है.
role of chartered accountant. We are going to see it in the next session. Very interesting session. Next one. And beta, after break, don't miss session because I'm going to develop your common sense for today's session is very important. And please read thoroughly all rules of accounts by modern approach and traditional approach. And after break, beta, we are going to start with important session. That is a part. Yes, kya part, beta? How to pass journal entries. Today's session, beta, don't miss it. Don't miss it. चलो टेक अ ब्रेक. विनू जी ब्रेक ले लीजिए.
वेलकम बैक वंस अगेन बेटा. इट्स अ लॉन्ग ब्रेक, सॉरी फॉर डिले. चाय बनने को थोड़ा सा टाइम लग गया और पीने को भी. यस, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक. यस. चलो 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 चलो. ओके. सो कम टू बेटा 400 पेजेस बुक. Come to 400 pages book. Write down. So now I will start with 400 pages book. Today I am going to conduct session up to 150 now. 115 120 तक सेशन जाएगा. So please spare some time. थोड़ा सा ब्रेक भी बड़ा हो गया अभी. Okay. So see, this is your first index page, which is normally printed by notebook companies only. So index, if you don't have this index, it is a main index. Okay, it is a main index. So here you can write chapter, then particulars, and this is page number. Page number. Here, chapter number, we don't know, basics. So we started with basics. And page number 1 dash, we don't know page number of end update. Okay, end number we are not aware. तो आपको क्या करना है, आपके कंपनी ने जो इंडेक्स बना के दिया है, चैप्टर नंबर, चैप्टर टॉपिक नेम, और यू कैन राइट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यू कैन राइट टॉपिक नेम एंड पेज नंबर. पेज नंबर. ठीक है. सो इंडेक्स बेटा ये बना लिया. नाउ कम टू इनर इंडेक्स. अभी राइट डाउन बेसिक्स. नाउ राइट डाउन बेसिक्स. प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर नोटबुक प्रॉपरली. आपकी नोटबुक प्रॉपरली मेंटेन करने की कोशिश कीजिए. सो यू कैन राइट हियर इन बेसिक्स, यस बेटा, date. Here it's always write date. And here page numbers. Page number I think is printed on your notebook. Try to take classmate notebook beta. Classmate notebooks are always best. 400 pages kilo, 300 pages kilo. ठीक है. So page number. And what is date beta? आज की डेट क्या है? 20 दिसंबर. हाँ. Okay. So basics. Over. So this is your 400 pages book. You have to maintain it properly. अभी क्या करना बेटा? अभी लिखो approaches. Divide it in two parts. Approaches, divide it in two parts. Traditional, modern. Write down traditional approach after that. Divide it in three parts. Divide it in three parts. One, personal balance sheet, real balance sheet, nominal P&L. Nominal P&L. After that, write down personal. After that, write down personal.
400 पेजेस के बुक में लिखना है। हाँ बेटा, ये सेकंड पेज पे लिखना है ना, बड़ा ऑब्वियस। ये दिस इज योर इंडेक्स ऑफ 1 पेज। आफ्टर दैट ऑन नेक्स्ट पेज यू विल राइट दिस। पर्सनल राइट डाउन एंड प्लीज हैव नोटबुक हैविंग लाइंस। हाँ, ऐसे लाइंस होंगे, वही नोटबुक यूज करना। प्लेन नोटबुक बेटा प्लीज डोंट यूज प्लेन नोटबुक्स। ड्यू रिलेशनशिप, ड्यू रिलेशनशिप, राइट डाउन इन ड्यू रिलेशनशिप बेटा। डेबिट द डेटर, क्रेडिट द गिवर, एंड सेटलमेंट रिलेशनशिप। ड्यू रिलेशनशिप मतलब उधारी, एंड सेटलमेंट रिलेशनशिप, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, आर यू विथ मी बेटा? रफ पेज में लिखो बेटा, राजेश कुमार। If you do not have 400 pages book, yes, in last session only I told you कि have 400 pages book। एक ही बुक रखो ना अच्छी खासी, क्यों 4-5 बुक्स कर रहे हो, 200-200 बुक्स पेजेस की। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में लेके आना बेटा, कोई बात नहीं। यू कैन राइट इट ऑन रफ पेज। नाउ राइट डाउन बाय रेड पेन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा गलत लिखा इधर। क्रेडिट द क्रेडिटर, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। हाँ जी बेटा, क्रेडिट द क्रेडिटर, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। जस्ट चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग बेटा। यस, राइट डाउन डेटर बिकम्स गिवर। सो सी क्रॉस करो, ऐसा क्रॉस करो, एंड क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर। क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर, क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर। यस सर, यस सर, यस सर। आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। क्रेडिट द क्रेडिटर, यस। थैंक यू फॉर correcting me, all of you. This is the first rule. Write down now. Real debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. Correct है? 3, nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Over. Yes beta, one notebook is for class notes and one book for revision. Revision is 100 pages book and class notes is 400 pages book.
And one notebook will keep separately only for journal entries. Only for journal entries for all topics. Okay? If you are doing it systematically from very first day, अरे मैंने बोला था प्रिया राइट इट इन 400 पेजेस बुक स्टार्टिंग में ही बोला था रहने दो अभी 100 पेजेस बुक में रहेगा तो भी चलेगा नाउ प्लीज कॉपी इट आफ्टरवर्ड्स ओके 100 पेजेस बुक में भी चलेगा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि नहीं बेटा ये तुम लोग सुनते ही नहीं हो रे चलो आगे जाते हैं चलो नेक्स्ट ठीक है बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है हाँ जी सेकंड वन इक्वेशन अप्रोच मॉडर्न अप्रोच नाउ आफ्टर वन लाइन राइट डाउन मॉडर्न अप्रोच टेक रेड पेन से लिखो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑब्लिक इक्विटी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ऑब्लिक इक्विटी कैपिटल और इक्विटी एक ही है एंड लाइबिलिटीज then write down by red pen only profit is equal to income minus expense and loss is equal to expense or greater expense minus income profit is equal to income minus expense and loss is equal to expense minus income now normal pen beta use black pen mandatory debit balance liabilities credit balance capital credit balance income please have patience credit balance and expense debit balance in last session we have finished with this concept income minus expense करेक्ट है लास्ट सेशन में हमारा ये कंप्लीट हुआ था इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस यस ठीक है Please, beta Muskan, you can watch my previous session and write all these things. In last session, beta, I already explained you, and today I promise you to give it in writing. So one more time, personal account, please say loudly, speak loudly, beta. Debit the debtor, credit the creditor. Debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out. Nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. One more time. Now I will ask you, personal account due relationship. Yaad karo. Debit the debtor. Very good. Credit the creditor. Very good. Please close your eyes and please answer it. आप घर पे बैठे हो ऐसा मत सोचो. You are sitting in the classroom. Okay. Assume you are sitting in the classroom and speak loudly. Okay. Settlement. Settlement. Debit the. Very good. Receiver. Credit. Very good. The giver. Real account. Real account. Debit what comes in. Credit what goes out. And nominal account. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. Very good, beta. Yes. Modern approach, asset minus liability is equal to capital or asset is equal to liability plus capital.
एसेट डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, इनकम क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस. ठीक है, टिल नाउ एनी डिफिकल्टी? नो. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम एंट्रीज पार्ट. और कुछ लिख के देना रहेगा क्या? नहीं. गोल्डन रूल्स हो गए, ये कल ही एक्सप्लेन किए थे. सी, जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज. इन सिंपल लैंग्वेज we record it date wise. Date wise, as and when occurs, we note down this. Okay. Now, see some part of journal entries. अभी हम लोग थोड़ी सी जर्नल एंट्रीज समझने की कोशिश करेंगे. तो जर्नल एंट्रीज समझने की कोशिश करते हैं अभी. अच्छा, ये तो शॉपकीपर और ये हो गया था शायद से. ये हो गया था ना अपना. SS started business with cash rupees 1 lakh. SS started business with cash rupees 1 lakh. Write down. Write down in your notebook. Number one. Number one. SS started business cash rupees 1 lakh. Cash rupees 1 lakh. Write down traditional approach. Write down traditional approach. सबसे पहले how to write the answer. Okay. So first one, we will identify accounts. Please be with me. Don't pass entry directly. Don't pass entry directly. Today I am giving you guidance for 10 entries. आज मैं 10 entries आपके करवा के लूंगा. And in next session बेटा, yes, ये 10 entries आप भी करोगे. Yes, next session में I will ask you and we will play game in next session. Okay. So identify accounts or even today also. Last के 5 minutes we are going to play one game. कि कौन सबसे तेज आंसर देता है, कौन सा रीजन. So let's see which region will win. Identify accounts. So how many accounts are there? One is cash. One is cash. Write down cash account. And then second one is SS. SS means Sanket sir. But Sanket sir is owner. Therefore use the word SS capital. तो सबसे पहले क्या करना है? You have to identify accounts. दो accounts identify करने हैं. So one is cash and second one is SS. So SS capital is a second word. Correct है? Okay, identify account. Now write down identify type. Identify type. So tell me, cash is which type of account, beta? Cash, cash. चलो लिखो. Cash is, yes, very good. Don't pass entry directly, beta. Cash is real account. Please, cash is real account. We won't pass direct entry. Yes, we are very at basic stage, beta. So no one 11, 12 standard, beta. Normally we used to pass entry directly, but here first I develop your confidence. I will develop your confidence. SS capital is a personal account. SS is a personal. Okay. Apply rule. Apply rule. 3 types में cover होगा. Apply rule. What is rule, beta? What is rule? In business, think from the business angle. Think from the business angle. Is called as business entity concept. Think from business angle. You can write here business entity concept. Think from business angle and not SS angle. Think from business angle and not SS point of view. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस के नजरिए से देखो. बिजनेस में कैश आ रहा है. बिजनेस में कैश आ रहा है.
So debit what comes in, cash is a real account. Real का रूल क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. And personal account, business वो वापस रिटर्न करेगा. So many people answer कि this is creditor, and one you can think SS is a giver. Both approaches are correct, but more correct creditor because business has to return it. ड्यू रिलेशनशिप है. सो आप मुझे पूछोगे तो क्रेडिटर है, पर कुछ लोग इसको गिवर भी बोल सकते हैं. कुछ लोग इसको गिवर भी बोल सकते हैं. संकेत सर ने पैसा दिया, सो गिवर से ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट इज क्रेडिटर. बट बोथ अप्रोचेस आर करेक्ट. आइदर यू गो बाय क्रेडिटर और यू गो बाय गिवर, बोथ हैविंग क्रेडिट बैलेंस, पर मोर अप्रोप्रिएट इज अ क्रेडिटर. ज्यादा बराबर क्या है? क्रेडिटर. क्योंकि बिजनेस विल रिटर्न दैट मनी ना. बिजनेस वो आपसे लेगा और आपको वो पैसा रिटर्न करेगा, तो यू आर अ क्रेडिटर. पर बहुत से लोग गिवर का रूल अप्लाई करते हैं. ओके, सो एंट्री विल बी, so how to write this entry? See, this is how we note down this cash account debit and then amount 1 lakh to SS capital to, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, लीव सम स्पेस, राइट, टू SS capital and 1 lakh, to SS capital and 1 lakh. Okay, draw this properly by pencil नहीं, by scale. हाँ, by scale and then journal entry. And then journal entries. Leave this space to SS capital. Cash to SS capital. Why we write it in the same way? Because you can easily identify credit side. You can easily identify credit side. Credit is slightly from right side while passing entry. If it is in one line, then beta, it is very difficult to identify. So जिसने भी निकाला उसने ऐसा क्यों निकाला, टू थोड़ा सा आगे, बिकॉज देखने के लिए इजीली समझ में आ जाए. इफ यू राइट इट प्रॉपरली, थोड़ा सा टू आगे लिखा तो एक डेबिट एंड नीचे का क्रेडिट, ये इजीली समझ में आएगा. सो इसके लिए उसने ऐसा लिखा है. ओके, तो थोड़ा सा आगे से लिखना है. टू एसएस कैपिटल. आर्ट है ना, ये आर्ट है. जिसने भी ढूंढा वो आर्ट है. एंड वी आर जस्ट फॉलोअर्स. ओके, अंडरस्टूड. नाउ मॉडर्न अप्रोच. Yes. Very good. 1 lakh. 1 lakh, 1 lakh. ठीक है. Now modern approach. See, cash account, capital account, real, personal. Debit what comes in, credit the creditor. Entry. See, this is how you have to write the entry. Cash account debit 1 lakh to SS capital 1 lakh. This is how you write your entry. This is traditional approach. In this batch, I'm going to teach you not only traditional approach, but also modern approach. So previous batches, I never take beta modern approach. Narration beta being SS introduce the capital. There is no need of narration beta now. I will teach you in the journal entry. I will teach you in the journal entry. This is only for understanding. Narration is nothing but your, narration means disclosure in simple language. Okay. So every time in CA course, you don't need narration in real life. Narration is only for bookish purpose. चलो अभी मॉडर्न अप्रोच समझ लेते हैं अभी. सो today's homework beta, now you can finish this by using this technique and now you will take screenshots. तो अभी screenshots लेना. मॉडर्न अप्रोच, अभी screenshots लेना. मॉडर्न अप्रोच बेटा, सी मॉडर्न अप्रोच में सेम थिंग, आइडेंटिफाई अकाउंट्स, आइडेंटिफाई टाइप, but here balance is important. Balance. Modern approach is not talking about rule. Modern approach is talking about balance. Cash and SS capital. Okay, two accounts are same. Type, wait. Now type is not real, personal, nominal. Here asset, liability, expense, income and capital. So cash is an asset. Cash is an asset. Okay, and SS capital is capital account. So asset increases, cash आया. So डेबिट बैलेंस. कैश को कौन सा बैलेंस देंगे हम लोग? डेबिट बैलेंस. कैश को डेबिट बैलेंस. ओके, इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीजेस एंड कैपिटल एज अ क्रेडिट बैलेंस. ओके, ठीक है. अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे.
effect on balance sheet. See, in balance sheet, liability and capital on the left hand side, it's mandatory. Liability and equity on the left hand side and asset on the right hand side. So liability equity left hand side, asset on the right hand side. Now cash किधर आएगा? हाँ, cash increase by 1 lakh. 1 lakh से increase हुआ. Cash increase by 1 lakh on the asset side and capital on the liability and equity side. SS capital increase by 1 lakh. So this is the effect. So here in modern approach, we have to understand not entry. We have to understand effect. Okay. So this is more proper way of understanding the journal entry in modern approach. तो modern approach में आपको journal entries को देखना है. Okay. चलिए. So take a screenshot. Understood? Cash. So you want to write down? चलो लिखो. Write down. Modern approach. Modern approach. Identify accounts. Identify accounts. Identify type. Then balance. Cash. SS capital. Identify type. Asset. Here it is asset. SS capital is capital. Balance asset increases, so debit, capital credit. And simply effect. Effect. So now first time you can write balance sheet in this way. Liability, rupees, asset, rupees. First time, only 3 lines. Only 3 lines. Asset, cash. And here you will write capital, 1 lakh. Yes. So both sides are matching, asset side and liability side. So your equation tallies. Left hand side is liability, but it has a credit balance. Huh? Though it is on the left side, but it has a credit balance. And asset is though on the right side. Balance sheet में उल्टा होता है. In balance sheet is a reversal position. Liability credit side, left side, and asset side, right hand side. Easy है बेटा? Easy है? सुनना बेटा, ये कर्टन अच्छे से बंद करना. कर्टन ये पर्दा थोड़ा अच्छे से बंद कर एकदम. हाँ, एकदम. चलिए. ठीक है? Understood बेटा? Yes. Which approach is more appropriate? Which is you are finding easy? Which your approach is you are finding easy? Which approach is easy beta? Devansh is saying traditional, Rashika traditional, Ishani modern. अपनी अपनी choices है. You must know both approaches. You should know both approaches. चलो. So have you written? Yes. अभी हम लोग screenshots लेंगे. Loan taken 1 lakh rupees at 8%. 8% is the interest rate. इसको बोलते हैं interest rate. Okay. So 1 lakh का loan लिया. Can you identify traditional approach में 2 accounts? Yes. चलो. Traditional approach. Traditional approach. Can you tell me loan taken का traditional approach? चलो. Loan taken. Traditional approach. Yes. Who is answering very fast? I don't want answer directly. सबसे पहले identify accounts. So don't copy बेटा. अभी लिखो मत. You can copy it afterwards. Okay. You can take a screenshot. So which 2 accounts? Cash and liability नहीं बेटा. Cash and loan. Vidhi Patel. सबसे तेज answer. By WRO students. WRO की विधि. Very good बेटा. Very good. Keep it up. Cash and bank loan.
कैश एंड बैंक लोन, वेरी गुड। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है बेटा? कैश, यस। नाउ टेल मी, कैश एंड बैंक लोन, very good. Cash is which type of account and bank loan is which type of account? Cash, identify cash and bank loan account. Tell me. Cash is a real account, very good. And bank is artificial person. Okay, bank is artificial person. So bank is a personal account. Bank is a personal account. Cash and bank loan. Bank is a personal account. Apply rule. Debit what comes in business में. Business में cash comes in. So debit what comes in. Very good. And bank loan is credit the creditor. उधारी पे लिया ना, वापस रिटर्न करना पड़ेगा. Payable है, payable. So credit the creditor. So entry is cash account debit to bank loan. Cash account debit to bank loan. Okay. Screenshot 1. Screenshot 1. You can watch this session afterwards once again. So cash to bank loan. Not giver, creditor. Creditor, उधारी पे दिया है, बाद में वापस रिटर्न करना पड़ेगा. So giver more appropriate is creditor. Screenshot 1. तो एक do one thing. We'll give screenshots at the end. ठीक है, बाद में लेना, पूरे screenshots बाद में लेना. ओके. बैंक अकाउंट से ज्यादा, हाँ, बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो, कैश अकाउंट भी बोल सकते हो. सो योर कैश इंक्रीजेस. कैश मतलब गूगल पे रे. बैंक इज गूगल पे एंड कैश इज बेटा वट एवर इन द पॉकेट, हार्ड कैश. गांधी जी. गूगल पे इज अ बैंक अकाउंट एंड हार्ड कैश इज अ गांधी जी अकाउंट, कैश अकाउंट. Yes, beta. If you are wrong, please tell me, sir, I'm wrong. Now I understood. Okay. If you are wrong, beta, please just mention it. Sir, I was wrong. Now understood. Okay. If you are wrong. Yes, I just want to check. Please apply your mind. Beta, I don't want direct entry. I want to develop your thinking. मुझे आपका thinking develop करना है कि आप entry को कैसे देखते हो, आप entry को कैसे समझते हो, वो मुझे develop करना है. Easy? Easy? करते बेटा. मॉडर्न अप्रोच में ड्राइंग्स कंसिडर करते. ईशानी, हु टोल्ड यू, कुछ तो गलत मिथ मत रखो. एंड नाउ फोकस ओनली ऑन दीज एंट्रीज बेटा. ईशानी, नाउ फोकस ओनली ऑन दीज एंट्रीज. चलो मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच में भी सेम अकाउंट्स, कैश एंड बैंक लोन, बट कैश इज एसेट एंड बैंक लोन इज लाइबिलिटी. बैंक लोन इज लाइबिलिटी. मॉडर्न अप्रोच में थिंकिंग इज डिफरेंट. बैलेंस एसेट को एसेट ही देंगे बिकॉज एसेट इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट बैलेंस. सो किधर दिखेगा देखो बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी एंड इक्विटी, रुपीज एसेट रुपीज. देखो कैश आ जाएगा एसेट साइड पे, इंक्रीज इन 1 लाख, इंक्रीज इन 1 लाख. ओके. कुणाल शुरू किया है, हो जाएगा कंप्लीट बेटा, अभी वेट कर. नहीं, इंटरेस्ट अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ लोन लिया है. 31 मार्च को देखेंगे इंटरेस्ट, अभी नहीं. सो वी डोंट हैव टू पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट. लोन बढ़ गया 1 लाख से. यस. टेल मी वेदर यू वांट स्क्रीनशॉट्स नाउ और एट द एंड. यू वांट स्क्रीनशॉट्स नाउ और एट द एंड? प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन में. स्क्रीनशॉट्स आप भी लेना चाहते हो या बाद में? यस. डेवलपिंग ना बेटा, अभी अभी पूरा समझ में आ रहा है ना आपको? अभी समझ में आ रहा है ना पूरा? यस. अच्छे से टेल मी. लोन टेकन, कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस है, बैंक लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है. एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड. थोड़े बहुत बोल रहे नाउ. ठीक है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेइंग बाद में. ठीक है, बाद में लेते हैं. चलो 2 नंबर की एंट्री हो गई. सो फर्स्ट एंट्री कैपिटल इंट्रोड्यूस. एंड इन नेक्स्ट सेशन बेटा प्रॉमिस मी एवरीवन will answer. Okay.
सो नेक्स्ट इसमें सब लोग आंसर्स देने वाले हैं और अच्छे से आंसर्स देंगे. चलो, थर्ड वन, परचेस फर्नीचर. परचेस फर्नीचर, आइडेंटिफाई टू अकाउंट्स. ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच. नहीं बेटा अभी मत लिखो राज, बेटा अभी मत लिखो. यू कैन राइट इट आफ्टरवर्ड्स. यस. चलो, परचेस फर्नीचर. चलो, दो अकाउंट्स कौन से? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. फर्नीचर एंड कैश. सबसे तेज आंसर दिया निशी ने. एनआरओ. वेरी गुड बेटा. फर्नीचर एंड कैश. एंड आइडेंटिफाई टू अकाउंट्स के बाद आइडेंटिफाई टाइप ऑल्सो. आइडेंटिफाई टाइप ऑल्सो बेटा. टाइप भी आइडेंटिफाई करो. फर्नीचर एंड कैश कौन सा टाइप का अकाउंट है? वेरी गुड. एफ रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल, कैश रियल. यस. नाउ नेक्स्ट टाइम बेटा यू विल राइट बोथ आंसर्स साइमल्टेनियसली. अब दोनों आंसर साथ में लिखोगे. फर्नीचर रियल, कैश रियल. ओके. नाउ परचेस फर्नीचर. सो व्हाट रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन. वेरी गुड. डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड कैश का रूल क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. वेरी गुड. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. Yes. So what will be the entry? Furniture account debit to 20,000 to cash account 20,000. Furniture account debit to cash account. Yes. Very good. Very good. अभी मॉडर्न अप्रोच बताओ बेटा. मॉडर्न अप्रोच में चलो ये तो सेम है. फर्नीचर कैश. फर्नीचर डेबिट बैलेंस एसेट है. कैश एसेट रिड्यूस हो रहा है. एसेट रिड्यूसेस. इधर क्या एसेट रिड्यूसेस, यहां पे एसेट इंक्रीजेस. इंक्रीज होता है तो सेम बैलेंस, रिड्यूस होता है तो अपोजिट बैलेंस. नॉर्मली एसेट है डेबिट बैलेंस बट रिड्यूसेस देयरफॉर क्रेडिट बैलेंस. ओके, रिड्यूसेस. सो एंट्री विल बी एसेट अकाउंट फर्नीचर एसेट 1 lakh and cash decrease minus 1 lakh. So on the asset side, cash minus 1 lakh. So your net effect is 0. Net effect is 0. So your equation is tallying. Your right hand side and left hand side is tallying. Yes. Yes, all these entries you have to write it in 400 pages. Both asset, one increasing, one decreasing. One increasing, one decreasing. ठीक है? Yes. चलो, fourth entry. Goods purchase, cash, Sangam, cash and Sangam, 15,000. So how many effects are there? Cash में 20,000 का and on credit, उधारी, उधारी, credit मतलब उधारी, संगम से उधारी पे लिया 15,000. Okay. Purchases, cash, उधारी पे संगम. So how many accounts? And with type. With type. Very good. Very good. Mahi Shah wrote very fast. Very good, Mahi. Purchases, nominal, cash real, Sangam personal. Purchases nominal, real, cash, Sangam personal. Purchases expenses. Purchases is our expenses. So purchases is expenses, nominal account. Debit all expenses. Cash goes out. What goes out? And Sangam is our payable. Payable to Sangam. So creditor. Creditor. So entry will be purchases account debit. Gross 20 plus 15. Total purchases 35. Total purchases 35. Cash 20. Sangam 15. Very good. So purchases account debit kharcha. Cash goes out credit and Sangam creditor. Sangam creditor.
करेक्ट है बेटा? समझ में आया? ये भी समझ में आया पूरा? से यस और नो? परचेस कैश संगम. परचेस एक्सपेंसेस, कैश गोज आउट एंड संगम को पैसा देना है. सो वी हैव टू पे द अमाउंट टू संगम. सो देना है तो क्रेडिटर है. संगम अपनी उधारी पे हमें पैसा देना है. सो संगम इज क्रेडिटर. से यस और नो? यस बेटा. देखो बेटा, परचेस किया हमने 35,000 का माल. उसमें से 20,000 रुपए पे कर दिया कैश में, और 15,000 अभी भी बाकी है. जब बाकी है तो उधारी वाले का नाम लिखना पड़ेगा ना. उधारी वाले पे किसको पैसा देना है? संगम को. तो परचेस मैंने 35,000 का लाया जो मेरा खर्चा है. कैश मेरा 20,000 गोज आउट होगा. एंड जिसको उधारी पे पैसा देना है संगम, तो संगम मेरा क्रेडिटर है. उसको पैसा देना है, उधारी पे पैसा देना है तो क्रेडिटर, क्रेडिट द क्रेडिटर. ओके. और ये एंट्री पास करनी है. मॉडर्न अप्रोच में कैसे करेगा बेटा तू? मॉडर्न अप्रोच में बेटा लिखेंगे ना नरेशन. जर्नल एंट्री एग्जाम में नहीं आती है. जर्नल एंट्री इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते फाउंडेशन में. ये आपका डेवलपमेंट ऑफ अकाउंट्स है. दिस इज जस्ट डेवलपमेंट ऑफ अकाउंट्स. यू आर नॉट गोइंग टू आस्क these एंट्रीज इन द real exam. Okay, in real exam they will ask you different entries, all difficult topics entries. This is expected entries. These entries can be passed by any person in any course, not only in foundation CA, 11 12th also, and BCom person also, and other professional courses people also. But a posting part, Akhil, we won't see now. Posting part, we will do it later. See purchases. Now understand. Purchase is expense. Purchase is expense. And expense will transfer to capital account. Purchase किसको ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में. कैश asset reduced. And संगम is a liability. संगम is a person which is a liability. संगम को पैसा देना है तो लाइबिलिटी है. सो एक्सपेंसेस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस. कैश क्रेडिट बैलेंस. वाई? एसेट रिड्यूस्ड. पैसा गया ना आपसे, एसेट खत्म हुई, एंड लाइबिलिटी इंक्रीजेस, तो इट इज अ क्रेडिट बैलेंस. सो कैसे मेंशन करोगे? देखो, लाइबिलिटी एंड इक्विटी एंड एसेट. अभी देखो, परचेसेस कैपिटल में से माइनस होगा. परचेसेस कैपिटल में से माइनस होगा. हाँ, कैपिटल में से माइनस 35,000. परचेसेस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल. परचेस की वजह से प्रॉफिट कम होगा. प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होगा. कैपिटल भी कम होगा, ये याद रखो. सो परचेसेस विल रिड्यूस योर कैपिटल. एक्सपेंसेस विल रिड्यूस योर कैपिटल. इनकम विल add your capital. Income is added to your capital. So purchases reduce your capital. Cash reduction in the capital by 20,000. एंड क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने से इंक्रीज होएगा? 15,000 से. क्रेडिटर इंक्रीज होगा 15,000 से. अंडरस्टूड? नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट -20 ऑन द एसेट साइड, -20 ऑन द लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड. इजी? अरे इजी क्या, थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. परचेसेस कैपिटल में से माइनस होगा, कैश एसेट में से माइनस होगा, संगम बढ़ेगा, संगम लाइबिलिटी साइड पे बढ़ जाएगा. सो -35 + 15 इज -20, एंड एसेट साइड पे भी -20. विच अप्रोच इज नाउ इजी फॉर यू? अगेन द सेम क्वेश्चन. नाउ विच अप्रोच इज इजी फॉर यू? Now which approach is easy for you? See, if you clear with these 10 entries, मैंने 10 entries चुन चुन के निकाली आपके लिए. If you clear with all these 10 entries ना, बेटा दुनिया की कोई ताकत नहीं है. No one will stop from passing any journal entry very easily. Very easily. If once you develop this logic, identify accounts, identify types, either go by rule or go by balance, and then pass entry. Now which approach is more easy?
बेटा सी, I develop your confidence. I want to develop your confidence. But ultimate hard work. Today you have to do these entries minimum 5 times. If you clear in these basics, no, in these 10 entries, it will be throughout your CA journey. It will be very easy. You have to work hard on your basics. Once you are clear with basics, no one will going to stop you from your achievements. आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए. पौधे का बेस स्ट्रांग होगा ना, फल अपने आप मिलने वाले हैं. ध्यान में रखो, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जिसको समझ में आया उसको पूरा अकाउंट समझ में आया. और आज इसकी प्रैक्टिस करो. व्हाट यू टू डू एट होम, you will ask yourself, you please give your notebook to your mom, dad, brother, sister, and tell them, take my revision. Ask me any journal entry. Ask me any journal entry. I will give you this by sir's approach. Identify accounts, then you will identify type, then you identify balance, and then pass entries. Okay. Promise me, आज promise करना है आपको मुझे. No बेटा, anything purchase asset नहीं. एसेट मतलब जो दिखता है और जो लॉन्ग टर्म में है. दिस परचेसेस यू आर गोइंग टू सेल इट इमीडिएटली. सो दिस इज नॉट एसेट. दिस इज नॉट एसेट. ओके. एनीथिंग परचेसेस और गुड्स परचेसेस. इफ गुड्स परचेसेस देन एक्सपेंस. इफ फर्नीचर परचेस देन एसेट. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. इफ गुड्स परचेस देन दिस इज एक्सपेंस. गुड्स फॉर सेलिंग पर्पज. एंड इफ यू परचेस एसेट, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट. ध्यान में रखो, गुड्स परचेस के तो आपको बेचने के लिए लिए. सी, अभी मैं एज्यूम करता हूं कि मैं जो हूं बेटा, मैं ग्रोसरी बेचता हूं. अच्छा, धान्य बेचता हूं. तो मेरे पास गेहूं आए, तो गेहूं लाए और गेहूं बेचे, तो गेहूं मेरे लिए परचेस होगा. एंड गेहूं सेल करना मेरे लिए इनकम होगा. परचेस किया तो खर्चा होगा और सेल किया तो इनकम होगा. पर वही मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है, गेहूं का बिजनेस है. और बेटा मैंने एक एसी लाया, एयर कंडीशनर आया, तो एयर कंडीशन बेटा मेरे लिए एसेट होगी. आया समझ में? तो वो खर्चा नहीं है, वो एसेट है. ओके, इजी. चलो, लास्ट वन ऑफ द डे, wages paid. Now you only tell me traditional approach. How many accounts are there? Wages paid. वेजेस पेड. चलो बताओ जल्दी से. वेजेस पेड, वेजेस पेड बोलो बेटा. लास्ट है, लास्ट आज का. यस बेटा, लास्ट है आज का. देन विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू विल राइट इट इन दी नोटबुक, 100 पेजेस बुक में. चलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, चलो कोई भी गिव अप नहीं करेगा. लास्ट एंट्री, थिंक ऑन दिस. हाँ जी, सैलरी नहीं, वेजेस. वेजेस, वेरी गुड, वेरी गुड लिसा, वेरी गुड. सबसे तेज आंसर दिया, सबसे तेज किसने आंसर दिया? इंद्रशीष फ्रॉम यारो. वेजेस एंड कैश. वेजेस इज नॉमिनल अकाउंट. वेजेस नॉमिनल, कैश रियल. yes, now you are developing your common sense, ha beta. Wages debit all expenses, credit what goes out, and entries wages account debit to cash account, wages account debit to cash account. Very good. Yes, now tell me modern approach. Modern approach, modern approach. And I am giving you 5 homework, ha beta, 5 entries for homework. रफ पेजेस पे लिखना है. ऑल दिस यू विल राइट इट इन द फेयर एंड 5 एंट्रीज यू विल राइट इट इन रफ एंड वी विल डिस्कस इट डे आफ्टर टुमारो. मॉडर्न अप्रोच, टेल मी. मॉडर्न अप्रोच में क्या होगा? वेजेस एंड कैश टू अकाउंट्स. बट वेजेस इज एक्सपेंस एंड एक्सपेंस कैपिटल रिड्यूस करेगा, कैपिटल को कम करेगा. कैश एसेट रिड्यूस बिकॉज कैश गोज आउट, सो एसेट रिड्यूस करेगा. सो एक्सपेंस को डेबिट बैलेंस एंड कैश रिड्यूस, एसेट रिड्यूस, क्रेडिट बैलेंस. सो इफेक्ट्स, कैपिटल को कम होगा, कैपिटल में से -2000 एंड कैश में से -2000. सो -2000 ऑन द एसेट साइड, कैपिटल -2000 ऑन द लाइबिलिटी साइड, एंड योर अकाउंट्स इज गोइंग टू टैली. सी, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर. आज करोगे कॉपी? अच्छे से करोगे? यस, वेरी गुड. चलो टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम सेकंड एंट्री.
स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड एंट्री से लीजिए। स्क्रीनशॉट वन, चलो लीजिए बेटा। स्क्रीनशॉट वन फ्रॉम सेकंड एंट्री। हो गया, हो गया। वी हैव फिनिश विद टुडेज होमवर्क। और अभी नहीं, अभी का स्क्रीनशॉट लो और फिर होमवर्क लो। बेटा प्लीज 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 लाइक बटन को प्रेस करना, ताकि बच्चों को मैक्सिमम समझ में आए कि ये लेक्चर्स अच्छे हैं। एंड सेकंड वन, यू कैन शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये स्क्रीनशॉट वन, स्क्रीनशॉट टू, स्क्रीनशॉट टू, जर्नल एंट्रीज का 400 पेजेस बुक में। फर्स्ट वन वी ऑलरेडी कवर्ड। थ्री, स्क्रीनशॉट थ्री, ट्रेडिशनल अप्रोच, फर्नीचर परचेस। स्क्रीनशॉट फोर, स्क्रीनशॉट फोर। हो गया बेटा, 5 मिनट। पेशेंस रखो, 5 मिनट। यस बेटा। इंद्रशीष, यस। थैंक यू विधि। यस। आर यू फाइंडिंग एनी डिफरेंस इन योर 11th 12th टीचर्स एंड मी बेटा? थोड़ा अलग लग रहा है क्या अभी आपको? ये कौन सा स्क्रीनशॉट था रे? 5 है ना अभी? हाँ। थोड़ा सा थिंकिंग में बदल हुआ क्या आपके? यस, थोड़ा सा थिंकिंग डिफरेंस। हाउ संकेत सर पास एंट्री एंड हाउ अदर फैकल्टीज पासेस एंट्री। हाँ बेटा, एक ग्रुप बनाने वाले हैं, डोंट वरी। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर हो गया बेटा। एक 5 मिनट रुको। स्क्रीनशॉट सिक्स, 7 ही स्क्रीनशॉट है आज। आठ आठ, 8 स्क्रीनशॉट्स होंगे। बोथ syllabus आर सेम। Yes, I'm not asking about syllabus, beta. I'm asking about thinking difference. बेसिक्स में आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। I'm asking you about your thinking process. Means, yes, entries, everyone passes entry, beta. Everyone. Only the way of understanding is different. हाँ, 11th 12th के एंट्रीज डायरेक्टली जंप करते हैं। वेरी गुड। हमने कभी डेटर एंड क्रेडिटर सीखा ही नहीं, डायरेक्ट रिसीवर गिवर सीखा। वेरी गुड। देवांश बोल रहा है डेटा क्रेडिटर तो आपके वजह से समझा सर। स्टडी शेड्यूल का एग्जांपल बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन, वन्या जी नेक्स्ट सेशन में। लास्ट वन। ओके, सो टुडेज होमवर्क, सी what are my expectations in the next session. You can answer any 5 entries and in both ways very easily. And one more, your homework दे रहा हूं। हाँ जी बेटा। यस, टेक दिस बेटा। टेक अ स्क्रीनशॉट, सैलरी पेड टू आनंद, 6 नंबर। दिस इज होमवर्क।
6 नंबर, स्टेशनरी परचेस 8. You have to think in traditional approach and modern approach. Stationery purchase, homework 7 number, goods sold 8, goods sold 8 number, homework में 10 एंट्रीज है टोटल. इन्वेस्टमेंट इन एफडी, होमवर्क इन्वेस्टमेंट एंड 10 number, depreciation. Now depreciation beta, science background students, I will explain it in the next session. So 10 entries are there. I enjoyed a lot in your batch. What is new in this batch? I started with modern approach also. So both approaches beta I taught it in this batch. I want to develop your thinking not only of understanding of the entry, but how your effects will be in the balance sheet. Okay, how your effects will be in the balance sheet, that I want to tell you. Sir, financial characters मतलब क्या? तो financial मतलब money related characteristics बेटा. शेयर कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, एंड डेफिनेटली संकेत सर इज विथ यू. संकेत सर विल डेफिनेटली इंप्रूव योर थिंकिंग प्रोसेस. और थिंकिंग प्रोसेस के लिए अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योर बेस, एंड बेस हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में. प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट सेशन में आने के पहले मैं पूरे 5 एंट्रीज पूरा याद करके आऊंगा, पूरा याद. उसके लिए you have to sit on one place and recall all these entries minimum 5 times. And beta, so if your base is strong, again and again I am giving you the guidance कि if your base is strong beta, your फाउंडेशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, योर एग्जाम विल बी वेरी स्मूथ. सो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए और नेक्स्ट इसमें हम लोग मिलेंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.